The Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Award is going to be presented today. Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia was an internationally acclaimed poet, educationist, social reformer, freedom fighter, and environmentalist. To celebrate and promote poetry, the Jaipur Literature Festival, in association with the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Foundation and a distinguished jury comprising of Namita, Gokhale, Sanjoy, Jaiprakash, Siddharth, continues its annual prize in memory of Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia. His poem, Dharti Dhori Re, is regarded as the unofficial anthem poem of Rajasthan. Film director Gautam Ghosh made a documentary film called Land of Sand Dunes on Mahakavi Sethia ji's anthem poem, which was conferred the National Award, Golden Lotus, by the Government of India. It was also performed as part of a musical at the 2016 Republic Day Parade at Rajpath in New Delhi before the President and Prime Minister of India, as well as the chief guest, who was the President of France. I'd like to invite on stage Honorable Minister B.D. Kalla ji. Would you please join us on stage, sir? And along with him, Sanjoy Roy, who's the jury member at MD Teamwork Arts, Namita Gokhale, head of jury and co-director Jaipur Literature Festival, fellow jury members Ranjit sir and Anamika, and Jaiprakash Sethia ji from the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Foundation and award winner K. Satchidanandan ji. A big round of applause for them. Ladies and gentlemen, it's our absolute honor and privilege to collaborate with the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Award every year. मेरी जन्मभूमि राजस्थान को नमन, मेरी मातृभाषा मायड़ भाषा राजस्थानी को नमन. All of you to give the most resounding claps for Kanhaiya Lal ji, Arvind ji, and for poets. Somebody once said poets are the unknown legislators of the world. मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है. पंजाबी में कहूँ तो बड़ा भागां वाला दिन है. In our prayers are songs of love, dirges of woe and taranas of protest. मैं बहुत खुश हूँ कि ये और मैं बहुत आभारी हूँ कि और ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार ने एक कवि के नाम पे एक इतना बड़ा पुरस्कार जो कि GLF पिछले 4 या 5 सालों से चला भी रहा है. Sethia साहब, thank you very much for suggesting this because it's very rare that a poetry award is given and I think this is one way of popularizing poetry. மிக முக்கியமான விருதாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கிறேன். The real poets do it very differently. It is a soft pill. You ingest it and then you realize the storm that's brewing up in your body. Thank you so much, and this august company, and so good that you were here. It is particularly delightful to be presenting this award. हमारी जो अपनी भाषाओं में हमारी अपनी कविता है उससे. Because one of the things I am so inspired to see so many young people here, and it is the transformative power of reading. And a poem is a made thing. I am very happy and honored that such a distinguished gentleman has been chosen by a very eminent jury to take this award. और सेठिया जी ने जो अपने कलम से लिखा है देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो हमारे इतिहास का एक अमिट पन्ना है. I am so glad to be standing here. I consider it an honor to be here in memory of Kanhaiya Lal ji Sethia, the Mahakavi of India.
Honorable Minister, ladies and gentlemen, on behalf of all of us at the Jaipur Literature Festival, we welcome you to your first appearance is Jaipur Literature Festival, Solwa Jaipur Literature Festival mein. B.D. Kalla ji has been a great supporter of the arts. He's the Minister of Culture and Education and ASI here in Rajasthan, and we're very honored that he's come again this year to present this prize. On behalf of, on behalf of the members of the jury and our co-director Namita Gokhale, I welcome you all this afternoon to this very prestigious 8th prize that we've given out. 8 years ago, Jaiprakash ji and Siddharth ji came and said, it's very important कि उनके grandfather के नाम पे ये prize हम उद्घाटन करें, इस prize को हम we create a platform for this prize, and we were absolutely delighted to do so. हम चाहते हैं कि जो राजस्थान का जो भाषा है वो भी नेशनल भाषा के हिसाब से माना जाए. नमिता जी ने ये कई बार इसी मंच पे रखा है ये बात, और हमारे ये कोशिश रहेगा हर फेस्टिवल में कि इसको आगे ले जाने के लिए. Namita ji, can I ask you to come and say a few words and introduce the prize and the process? नमस्कार. इस प्राइज़ को तो आप सब लोग जानते ही हैं. इतने सालों से ये चला आ रहा है. भारत के कई भाग से, कई भाषाओं से लोगों को सम्मानित किया गया है, मगर आज ये प्राइज़ मेरे लिए ख़ास मायने रखता है. इसलिए क्योंकि सच्चिदानंद जी जो हैं उनको मैं एक तरफ से गुरु भी मानती हूँ. नॉट ओनली फॉर हिज पोइट्री एंड हिज राइटिंग, बट द गिव बैक ही हैज़ ऑन द लिटरेरी वर्ल्ड. इन्होंने जिस तरह की साहित्य सेवा की है, जिस तरह से इन्होंने लेखकों को इनकरेज किया है, इतनी लंबी कहानी है कि आपको आज ये पूरी बातें नहीं सुनाऊंगी. वो जो इनको जानते हैं वो इस बात को समझते हैं. तो और हमारे साथ अनामिका भी जी बैठी हैं. अनामिका जी को ये प्राइज़ अवार्ड हुआ था वर्चुअली, उस दुनिया में जब हम लोग मिल नहीं सकते थे, जो लौट भी सकती है, पर आज तो हम सब लोग हैं. तो इन दोनों के लिए तालियां. और सेठिया जी और उनके बेटे और उनके परिवार के लिए बहुत तालियां, क्योंकि जिस तरह से वो अपने पूर्वजों की और अपनी भाषा की सेवा कर रहे हैं, आई एम वेरी डीपली इम्प्रेस्ड. अब नेक्स्ट कौन आएगा? आई थिंक रंजीत रीड्स द साइटेशन. Thank you, Namita ji. Can I please ask Ranjit Hoskote to come and read the citation on the occasion of the award? Ranjit. Thank you, Sanjoy. Mantri Mahoday ji, distinguished colleagues on stage, and all of you, friends in the audience. Before I read the citation, I just want to say how struck I was by a beautiful phrase that Namita just used, Sahitya Seva. It's so true of Satchidanandan ji. It reminds me of an idea associated with another city in Rajasthan, Nathadwara, where we speak of Chitra Seva, how creating a painting, an image of the divine is in the nature of devotion. So literature here is also it's a devotion. And here comes the citation, formally. The conferment of the Jaipur Literature Festival Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Award on K. Satchidanandan this year is a recognition of his remarkable oeuvre as a poet who has been a strong and consistent presence in 2 languages over the decades, Malayalam and English. He is also a translator of refined sensibility. His literary consciousness attuned both to his literary consciousness attuned both to aesthetic questions and to the urgencies of the historical moment. In the various roles that he has essayed with distinction as a poet, critic, editor of journals and anthologies, and cultural administrator, Satchidanandan has made key contributions to modern Indian literature. His commitment to world literature embodies an anchored cosmopolitanism,
at home in the world and well worlded at home. His interests in the other arts and in the humanities are deep as well as wide. His writing demonstrates his familiarity with music, painting, cinema, and archaeology. In a profound sense, Satchidanandan has helped shape India's vibrant literary scene while also being closely involved in India's cultural scene at large. Many congratulations. Thank you, Ranjit. Thank you, Ranjit. The Honorable Governor of Rajasthan has sent a message, and I'm going to ask Rajesh to read out the message before I invite the Honorable Minister to present the award. राजस्थान के महामहिम गवर्नर का मैसेज। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाकवि कन्हैया लाल सेठिया फाउंडेशन द्वारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सहयोग से महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पद्मश्री, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी साहित्यकार पुरस्कार आदि से सम्मानित स्वर्गीय सेठिया जी राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के विरल कवि रहे हैं। राजस्थान की धरती के यशोगान के साथ ही सामाजिक चेतना, जीवन संघर्ष और युगीन संदर्भों में अपनी मातृभूमि के अद्भुत शब्द चित्र उन्होंने अपनी लेखनी से उकेरे हैं। उनकी कविताएं लोक का राग अनुराग लिए हैं। मुझे कई बार यह भी लगता है कि लोकगीत, लोक संगीत ऐसे महान कवियों की वजह से ही पूरे समाज की धरोहर बने रहे हैं। धरती धारारी या फिर अरे घासरी रोटी जैसी राजस्थानी कविताओं के साथ ही लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे जैसी ओजपूर्ण कविताएं लिखने के साथ ही उन्होंने रचनाएं युगीन संदर्भों के गहरी उनकी कविताएं युगीन संदर्भों की गहरी साख से भरी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वर्गीय कन्हैया लाल सेठिया शब्द शब्द ओज के विरल कवि हैं। यह सुखद है कि उनकी स्मृति के अक्षुण्ण रखने के लिए कन्हैया लाल सेठिया फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार की ये पहल की गई है। आपके इस आयोजन में अवश्य ही भाग लेता यदि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता नहीं होती। महाकवि कन्हैया लाल सेठिया जी की स्मृति को नमन करते हुए पुरस्कार समारोह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका कलराज मिश्र। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। I didn't have any poet predecessors in my family, except that my elder brother used to write at that point of time, even though later he stopped writing. I grew up in a village which I think had a major formative influence on my writing, because the memories of the village keep coming back to my poetry, and those keep inspiring me even now. I go back to my childhood, I go back to the nature of the village. So there was that kind of a kind of Wordsworthian atmosphere in the village, because I used to swim in our pond and then pick flowers, climb little hills in the village, and so in fact I grew up in harmony with nature, which I think has stayed with me. And later, maybe it grew into a kind of interest in the environment in general. I studied in very ordinary schools, government schools, primary, and then a management upper primary school.
and then a government high school in Kodungalur, where I had to cross a river and go to the school. But the reading that I did in my childhood, again, I think has stayed with me. We had 2 libraries in the village at that time. That was the time when the library movement in Kerala was quite dynamic, and libraries were coming up in every little town and village. So there was one library which was very close to our home, and there was another which was close to my school. And there were, of course, the school libraries, which also I used occasionally. But mostly my readings were done in those libraries. And I grew up reading, of course, the original works by the writers who were famous at that time, because that was the time when modernism had not really entered Malayalam literature. So I read, Thakazhi and Keshav, and also the poets like Vaidapulli, Idashedi Govindan Nair, G. Shankarakurup, and then the 3 famous poets of the time, P. Bhaskaran, O.N.V. Kurup and Vaila. That reading, along with the readings of translations of great poetry and great fiction, especially Indian fiction, had a lot of impact on me. Not only Indian fiction, I would say, because Russian fiction, for example, was extremely popular at that time. So I read Tolstoy and Dostoevsky and Turgenev, all these in translations. I read all those major, Bengali novels in translation, as every Malayali of my time must have done. And indeed, poetry, especially Tagore's poetry, in the beautiful translations done by G. Shankarakurup, was another influence. Thank you, Pinky, and your team for making the film. It's my privilege to invite the Honorable Minister to come and say a few words on the occasion of the Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Award for Poetry. B.D. Kalla ji. यादेवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Dear friends, संजय रॉय जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी सेठिया, सिद्धार्थ सेठिया जी, ऑनरेबल श्रीमती नमिता गोखले जी, सुधीर बोरा जी, के सच्चिदानंद जी, श्रीमती अनामिका जी, Ranjit ji, Hoskote, distinguished guests, ladies and gentlemen and press. Dear lovers of literature and distinguished members sitting among the audience and interacting with the visitors. This session of festival is especially devoted to Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia. The emotional and imaginative depth of Sethia ji, his patriotism, his love of the soil, and his romanticism with his native desert land. It would be equally difficult to miss the music and picturesque quality of his poetry. One immediately falls in love with his धरती धोरारी. आ तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देह रमण ने आवे, हीरो यस नर नारी गावे धरती धोरारी. सूरज कणकण ने चमकावे, तारा इमृत रस बरसावे धरती धोरारी. वो हमारे वास्तव में राजस्थान के रविंद्रनाथ टैगोर थे. Such the choice of his words and arrangement of diction that even if we do not have much sense of music, we become a singer when we start reciting Dharti Dhonari. Common people started to develop fresh love, intimacy and charm for the sand dunes of Rajasthan after listening these lines. We have learned much about the greatness of Maharana Pratap, about his bravery, his large heartedness and his great contribution towards his rural tribal people. But Sethia ji went much further in search of the deeper human pain lurking in Rana Pratap's heart. हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हूँ लड़ो घणो
હું સયો ગણો મેવાડરી શાક બચાવણને પણ આજ બિલકતો દેખું હું જદ રાજ કવરને રોટીને તો નૈણા में रगत उतर आवे. रगत का मतलब रक्त, ब्लड उतर आवे. राणारो सोयो दुख जाग्यो. હું ક્ષાત્ર ધર્મને ભૂલું હું, ભૂલું હિંદવાણી ચોટીને. હું ભૂખ મરું, હું પ્યાસ મરું. મેવાડ ધરા આઝાદ રહે और शीश पड़े पण पाग नहीं. पीढ़ीरो मान उकाऊंला. उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ भी खो सकता हूं लेकिन अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा और जमीन को आजाद रखूंगा. ऐसे कवि थे सेठिया जी. एंड वंस फॉर ए few moments Rana Pratap, according to Sethia ji, finds himself helpless, decides to surrender to the opposing forces. But the Rana soon recovers his courage and continues his struggle with renewed spirit. Sethia ji's popular lines in Pithal or Pathal tell us about this inner pain, inner conflict, and the original face of Rana Pratap. The greatness of Sri Kanhaiya Lal Sethia lies in the fact that his popularity is equally penetrated among the rural habitats and the sophisticated city dwellers. Apart from being a great widely acknowledged literary figure, Sethia ji was a known freedom fighter, a social reformer, and also an environmentalist. अग्नि वीणा, वन फूल, मेरा युग, दीप किरण, प्रतिबिंब, आज हिमालय बोला, धरती धोरारी, पाथल और पीथल are the true manifestations of Sethia ji's patriotism, his extended humanitarian benevolence and his intimate affection for the common rustic people. The number of his literary creations he produced so that Sethia ji was equally proficient and skilled in Hindi, Rajasthani as well as in Urdu. Sethia ji writings greatly inspired the youth during India's freedom struggle. Sethia ji's idea of true socialistic pattern of society is reflected in his poem कुण जमीन रो धनी, ओ जमीन रो धनी के वो जमीन रो धनी. He advocated the rights of common farm workers and tillers of the soil. In the same way, his advocacy for the recognition of native language and local culture is reflected in his poem Maidro Hello. We really feel very proud that Sethia ji's contribution to literary field is now widely acknowledged. Mahakavi Sethia Award was given, started in the year 2016, and this year on the occasion of 8th Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Poetry Award is conferred upon the well-known literary figure and critic K. Satchidanandan ji. I welcome you on behalf of the Rajasthani people and government of Rajasthan. I hope the tradition will keep growing in the coming years. Now, I would like to say a few words in Rajasthani. Kanhaiya Lal Sethia राजस्थानी का कवि है और राजस्थानी में नहीं बोला तो राजस्थानी के साथ विश्वासघात उसी. देखो राजस्थानी भाषा वर्ल्ड री इसी भाषा है जिक्रो कोई मुकाबलो को नहीं. मैं हमेशा एक बात कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है. अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अपन करेंगे राम इज ए गुड बॉय, पर मारवाड़ी में आप मैंने कोकर कैसो राम भगवान नहीं है, राम नाम का लड़का है, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं. अरे रामुड़ा आज फुटबॉल खेलने को चले नहीं, अरे राम ले आजा पानी भरला टूटियो चली जैसी. अरे राम सा क्या बात है, आज डील चोखो गोरी उडियो उडियो क्यों लगे, ए हमारा राम जी है. अब बात कौन कह सके, घरी लुगाई रामुड़ा राम लिया को नहीं, ए हमारा राम जी है. बाप रे पति ने आदर सूचक शब्द बोल सी जिसका वर्ल्ड कोई भाषा ढूंढ लो पंडित आप
कई भाषा में आप फर्स्ट पर्सन ने आप रे समंदर हिसाब से नहीं पुकार सको, समंदर हिसाब से यदि पुकार सको तो मेरी भाषा रो नाम है राजस्थानी मारवाड़ी। यही तरीके से आज बरसात है, जौन बार आप देखो ये दिनों में जो कि बरसात हुए फिर नाम क्या है कोई बता सके आप लोगों में शू? मावट। और सावन में बरसात हुए जगह न कहेंगे सावन की रिमझिम, भादवारा लोर, 12 महीनों की 12 भाषाएं और 12 नाम में कोई डिक्शनरी में को मिले नहीं, वर्ल्ड री कोई भाषा में को मिले नहीं। आज इतनी रिच है, ये शब्दकोश बहुत बड़ो है। और मेरे बाद में आपने बताऊं ऊंट सबरा 200 पर्यायवाची शब्द है, कोई बताए दो कोई भाषा में जगह 200 पर्यायवाची शब्द हुए। मेरी भाषा राजस्थानी भाषा बहुत। और कन्हैया लाल जी सेठिया जो को काम करिए है, मैं समझूं कि वास्तव में माने नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो बोरी वास्ता कि माँ जो को काम करियो वो दुनियारी वास्ता एक मिसाल है। किस तरीके से एक सुजानगढ़ रे कस्बे में जन्म लियोड़ो व्यक्ति और हिंदी में, उर्दू में, राजस्थानी में कलम चलाई और कलम इसी चलाई कि बोरा गीत अमर हो गया। आज कटे भी कोई प्रोग्राम हुए बठे धरती दोहरारो गीत जरूर हुए। और इधर साथे साथे आपने बताऊं हल्दी घाटी में आप जाओ तो हल्दी घाटी में कन्हैया लाल जी सेठिया मैंने एक मिट्टी और मेरे ऊपर एक संदूक दी मैंने, और मैं लिखियोड़ो क्या था, कोनी कोरो नाम रेतरो हल्दी घाटी अठे हो गयो इतिहास पूजी जे इनरी माटी। कितनी जोरदार 4 लाइनें लिखी है। तो उनका याद करके मैं बताऊं तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने माटी का महत्व बताया है। और ये बताया है कि कुछ भी चला जाए हम अपनी देश की माटी पे किसी का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। उन्होंने बहुत जिकी बातें बताई है अपने बने अपने हृदयंगम करना चाहिए। मैं के सच्चिदानंद जी जिका अंग्रेजी रहा मलयालम रहा बहुत अच्छा पोइट है, बोरो भी स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, बोने बधाई दूं कि कन्हैया लाल जी सेठिया रो पुरस्कार आज बोने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मिलियो है। मेरी वास्ता आपने घनी घनी बधाई। और उम्मीद करूं कि आप कन्हैया लाल जी सेठियारी जिकी कविताएं हैं बोरो अंग्रेजी अनुवाद निश्चित रूप से मलयालम में अनुवाद करोला तो बठेरा लोग भी माटी री कीमत पहचानेला। और निश्चित रूप से मतलब स्वर्गाने शर्मावे, स्वर्ग का मतलब स्वर्ग आ तो स्वर्गाने शर्मावे, इन पर देर रमन ने आवे। अपन यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हीरो यस नर नारी गावे धरती धोरारी। सैंड ड्यून्स की जो धरती है वो धोरा की धरती, वो राजस्थान। तो कहने का मतलब वो है कि कन्हैया लाल जी सेठिया जी को हीरो बीकानो गरवी लो, हीरो अलवर जबर हटी लो, हीरो अजमेर भड़की लो धरती धोरारी। पूरे राजस्थान का चित्रण जो है उन्होंने ये आपने कवित्व में करी है। और कुल मिलाकर कन्हैया लाल जी सेठिया स्मृतियों ने मैं नमन करूं। मैं कई बार बसू मिलियो, माने पद्मश्री अवार्ड मिलियो, बहुत घना घना बड़ा बड़ा अवार्ड मिलिया, पर वो अवार्ड की रकम ने भी जन कल्याण में लगा दियो। और मैं सिद्धार्थ जी ने, जयप्रकाश जी ने धन्यवाद दूँ कि आज 8 वर्ष हो गया लगातार बोरे नाम ने अमर करने सारू आप ये अवार्ड ने जारी रख रहे हो। कीप इट अप और इन्हें जारी रखे हो ताकि बोरो नाम अमर रहे। और मैं साहित्यिक सोसाइटी ने कहना चाहूँ कि कन्हैया लाल जी सेठिया जैसे व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार मिलने जड़ा आदमी था, बहुत साहित्य की सेवा करी है। बहुत ही साहित्य की सेवाओं ने मैं कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारो वक्तव्य समाप्त करूं। और आप सब लोगों ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की और नए वर्ष की बधाई दूं। धन्यवाद। जय हिंद। May I please ask the Honorable Minister to present the award to K. Satchidanandan. जयप्रकाश जी आप भी आइए।
Ranjit Hoskote to give the citation, and Anamika ji, if you can present the shawl to K. Satchidanandan. Namita ji, if you can give the check, and if we can present the shawl to the Honorable Minister. Namita, if you could present this to the Honorable Minister. Sachida, if you can come and say a few words on the occasion. Honorable Mr. B.D. Kalla, my friends Namita, Gokhale, Sanjoy Roy, Anamika, Siddharth Sethia, Jaiprakash Sethia, Ranjit Hoskote. I'm here just to offer a few words of gratitude to the members of the jury as well as those who instituted this extremely important award for poetry. And it is with extreme humility, I'm sorry my throat is not very good. It is with extreme humility, gratitude and fulfillment that I accept the JLF Mahakavi Kanhaiya Lal Sethia Award for poetry. I thank the honorable members of the judging committee who chose me for the prize, and the KL Sethia Foundation, especially Jaiprakash and Siddharth Sethia, for instituting the award to celebrate the legendary multilingual poet, freedom fighter, and social reformer. I have three reasons, I think, to be happy here, at least three reasons. One, that it's being given in the name of the greatest poet of Rajasthani language, and perhaps, certainly one of the greatest poets of India. And secondly, it has brought me back to the Jaipur festival, in which I used to be a regular participant for several years. And thirdly, it gives me another opportunity to hold aloft the flag of my mother tongue, Malayalam, in which mostly I write, that I have been raising all through the 60 years of my writing across at least 6 continents. We are living in it. Can I get some water? We are living in a turbulent time when we are constantly reminded of Theodore Adorno's pronouncement that poetry is impossible after Auschwitz. And yet I believe that a poet is best equipped to fight and survive the worst forms of violence and share with Octavio Paz the belief that only the poet can transmute history, as the poet is one whose very being becomes one with his words, and therefore only the poet can make possible a new dialogue. Pablo Neruda, the Chilean poet I admire, also dreamt of poetry, a poetry of all things, a poetry where the fingerprints show, a poetry of loam where the water can sing, a poetry of bread where everyone may eat. Another great poet of our time, Czesław Miłosz, the Polish poet, considered poetry a participation in the humanly modulated time. The greatest poets of our time are united by what Paz calls the apocalyptic element that one finds in all the outstanding poets of our time. The poet thus re-enchants the disenchanted world by turning poetry into a symbolic act intended to transform the world. Genuine poetry has always opposed violence in its direct as well as oblique, tangible as well as intangible forms, and more than ever, it needs today to raise its profoundly human voice against all forms of violence. Poetry is an ear that hears beyond the understanding of common sociology,
an eye that sees beyond the color spectrum of everyday politics. It promotes self-awareness by opposing cultural and material violence. It stands against all that cripples man's moral and spiritual life, strives to resensitize man into suffering, alienation, and solitude, and to give positive non-violence and love the central place it ought to have in all human discourse. It has been for me, maybe for all poets, a conversation with myself, with others, with nature, and the mystery of the universe. Call it God if you like. I have been part of movements in poetry, and yet, as I look back, I find that poetry goes beyond all movements and is the movement itself and remains ever new and ever contemporary. I have recently been translating Kabir, Mirabai, Tukaram, Bulle Shah, Basava, Akka Mahadevi, Lal Ded, and several other Bhakti and Sufi poets, as I find them talking to me, talking to all of us, even now, cutting across time in the purest of voices that speaks straight to the soul. और ये भी मैं वादा करना चाहता हूँ कि मैं महाकवि कन्हैया लाल की कुछ कविताएं ज़रूर अनुवाद करूँगा मलयालम में और अंग्रेज़ी में भी अगर मुझे वो कविताएं हिंदी में मिले तो मैं सीधा कर सकता हूँ मलयालम में और अंग्रेज़ी में जैसे मिनिस्टर ने सजेस्ट किया धन्यवाद थैंक यू वंस अगेन Thank you very much, K. Satchidanandan, for that beautiful address, and we hope that this address is going to be available and we can put it out. It's our great honor. In 2021, we were not able to present the award in person. It's our great honor to have Anamika ji. May I please ask the Honorable Minister, B.D. Kalla and Namita ji, to come forward and present the award for 2021 to Anamika ji. Siddharth. Anamika ji, can we please have you say a few words on the occasion? नमस्कार दोस्तों, इधर भी और उधर भी मंच पर बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए लोग। अभी मैं बैठी यही सोच रही थी कि कन्हैया लाल जी सेठिया और के सच्चिदानंदन या रणजीत हॉस्कोटे की कविताएं क्या उतनी ही अलग नहीं हैं जितनी माइकल एंजेलो की और रैम्बर्ट की पेंटिंग अलग थी? और बावजूद इसके क्या दोनों के बीच ऐसी ही एक अंतर्धारा नहीं बह रही जैसी राजस्थानी और मलयालम के बीच बहती है? जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, those of you who have not yet seen Michelangelo and Rembrandt, for them I could say that when Michelangelo paints Jesus Christ, he's so lonely that his body is almost dissolved. It appears like a patch of light. When Rembrandt paints the same Christ on the cross, his body is so prominent that the bones seem to be sagging, hanging low, the skin hanging loose, and the struggle of the man who belongs to a community is writ large on his wrinkles. The same Christ, two versions of the same person, the person who has suffered. जो माइकल एंजेलो के क्राइस्ट हैं वो बहुत इतने ही अकेले हैं
जितना पेरिफेरी जिसको हम कहते हैं या मार्जिन पे बैठे हुए लोग कहते हैं, उनका अकेलापन है, एंग्स्ट ऑफ बीइंग। और रेम्ब्रांड के पेंटिंग में वो कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, वो समुदाय से उपजे हुए हैं, वो उस समुदाय से उपजे हुए हैं जिनकी कविता में तरंग है। अभी मिनिस्टर साहब जो कविताएं सुना रहे थे उनके साक्ष्य से, और जो मैंने कविताएं पढ़ी हैं सेठिया परिवार के सौजन्य से, उनके साक्ष्य से मैं कह सकती हूँ कि छंद में एक ताकत होती है जनमन से जुड़ने की, और वो टेलीग्राम की तरह, समझिए कि टेलीग्राफिक अर्जेंसी की तरह वो विद्युत गति से कौंधती है लोगों के कंठ में, लोगों के सहस्रार में, और कौंध के इट एस्टैब्लिशेस एन इमीडिएट कनेक्ट। तो अभी हम जिस युग में खड़े हैं, जिस वायलेंस की बात, वायलेंस के विपक्ष की बात सच्चिदानंद जी ने की अभी, और हम सब करते रहते हैं अपने अपने तरह से, अपनी अपनी तरह से, उसका प्रतिकार यही है कि भाषाओं के बीच का बहनापा विकसित हो और अनुवाद, जो दो संस्कृतियां जिनमें आंखें, हम ऐसे समय में खड़े हैं जब दो संस्कृतियां एक दूसरों से आंखें मिलाती हुई खड़ी हैं। कैसे खड़ी हैं आंखें मिलाती हुई? वैसे ही जैसे अमीर खुसरो की कविता में कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के, अपने ही रंग लंगलीनी ले मुँह से नैना मिलाए के। यह आंखें मिलना दो तरह का होता है। जॉन डन की कविता में एक्सटेसी में दो आर्मी खड़े हैं, लोग कहते हैं वो मेटाफिजिकल विट के साथ कि दो स्त्री और पुरुष ऐसे खड़े हैं जैसे दो आर्मीज़ खड़ी हैं और उनकी आंखें मिल रही हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण के प्रसंग में जय गोविंद कहते हैं, जयदेव कहते हैं गोविंद में, प्रीति कला है। कला तो है मगर उसमें प्रीति है, और छीनने की बात तो है लेकिन एक दूसरे को रंगने की बात भी है। जो छीना जाएगा वो पूर्वाग्रह होगा, वो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग होगी, वो वायलेंस होगा, और एक दूसरे को होली के रंग में रंगा जाएगा वो अनुवाद के माध्यम से होगा, जैसे रंजीत ने किया, जैसे सच्चिदानंदन जी ने किया, जैसे हम सब थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संस्कृतियाँ जब आंखें मिलाती खड़ी हैं तो प्रीति कलह भाव से प्रीति का तत्व प्रबल हो, कलह का टेंशन मिट जाए। इस संकल्प के साथ मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ, क्योंकि मुझसे कहा था संजॉय जी ने कि कविता सुना देना, ये लोग धरती का नमक हैं। एक छोटी सी कविता के साथ मैं अंत करती हूँ। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, मिनिस्टर साहब, वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान हैं, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी
जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। और ये दुनिया का नमक, जीवन का नमक कविता में है, आप सबके घर में है, दिल में है। Anamika ji, thank you so much. On behalf of all of us, B.D. Kalla Saab, thank you for coming here this evening. Jaiprakash ji, Siddharth ji, thank you for instituting the prize. K. Satchidanandan, thank you so much for being here. He has a session at 2:30 today at Bathak. So you will get to hear K. Satchidanandan again this afternoon. Ranjit Hoskote, Anamika ji, thank you so much. Namita, thank you. Have a wonderful rest of the festival. We thank you all for joining. And if we could have the video play on Dharti Dhorari. हमारी मातृभाषा को महान गीत है धरती धोरानी, जो को राजस्थान में और भारत के सब प्रांतों में और बाहर विदेशों में भी कम 15 करोड़ आदमी इन गीत में गावे। और कठे ही जार जंगला में अनपढ़ आदमी बैठा है, मैंने पूछ लियो तो वह कन्हैया लाल सेठिया को नाम जाने इन धरती के कारण। इनको शीर्षक है धरती धोरानी। धरती धोरानी, धरती धोरानी, आ तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमन में आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरानी। सूरज कणकण में चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे धरती धोरानी। काला बादलिया गहरावे, बिरखा बुगलिया गमकावे, बिजली धरती ओला खावे धरती धोरानी। दूर दूर बाजरियो लहरावे, मक्को झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे धरती धोरानी। पंछी मदरा मदरा बोले, मिश्री मीठे सुरसियों घोले, जीनू बाहरियो पंपोरे धरती धोरानी। नारा नागोरी हिद ताता, मधुआ ऊंट कणता काथा, ईरे घोड़ारी के बाता धरती धोरानी। ईवा फल फुलड़ा मन भावण, ईरे दीनू आंगण आंगण, बाजे सगड़ा सुंबड़ बागन धरती धोरानी। ईरो चित्तोड़ो गड़ लूठो, ओ तो रणवीरारो खूटो, ईरो जोदाणु नो कूटो धरती धोरानी। आबू आबे रे परवाने, दूनी गंगा जी ही जाने, उबो जैसलमेर शिवाने धरती धोरानी। ईरो बीकाणु गरबीलो, ईरो अलवर जबर हटीलो, ईरो अजय मेर भड़कीलो धरती धोरानी। जयपुर नगरिया में पटरानी, कोटा बूंदी कदन जानी, चामल करी कानी धरती धोरानी। कोनी नाम भरतपुर छोटो, घूमो सूरज मगरो घोटो, खाई मात फिरंगी मोटो धरती धोरानी। ईशु नहीं मालवो न्यारो, मोबी हरियाणु है प्यारो, मिलतो तीनारो उनियारो धरती धोरानी। ई पर तनड़ो मनड़ो वारा, ई पर जीवन प्राण उवारा, इरी गजा उड़े गिगनारा मायड़ कोड़ारी। इन्हें मोत्या थाल बगावा, इरी धूल दिलाड़ लगावा, ईरो मोटो बाग सरावा धरती धोरानी। इरे सतरी आन निभावा, इरे पतने नहीं लजावा, इन्हें माथो भेंट चढ़ावा धरती धोरानी, धरती धोरानी। दे रे